Welcome to all of you on Grow Strong, dear students and other fellow listeners. Today we are going to explore the facts about the entitled theme, Schedules of Reinforcement. As we know that reinforcement is simply defined the environmental substance or event which accelerates the rate of responses from an organism. डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं, एज पर द ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, reinforcers are being considered the heart of learning. It means reinforcement plays important role in order to make the learning process possible. एक वर्कर काम नहीं कर सकता है जब तक कि हम उसे reinforcement in the form of wages नहीं दे सकते हैं. एक लर्नर तब तक टास्क परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट नहीं हो जाएगा जब तक कि उसे टीचर या इंस्टीट्यूशन रिवार्ड या reinforcement नहीं देगी. रिवार्ड और reinforcement in the form of good grades, in the form of encouragement, in the form of scholarships, in the form of other monetary benefits. So it means it is actually the reinforcement which motivates an individual to work or to perform any type of task. That is why operant conditioning theory believes how different reinforcers pushes an individual to act in a desired manner. Now, there are the various schedules of reinforcement. Number 1, continuous schedule of reinforcement. Continuous schedule of reinforcement is that schedule of reinforcement in which we are giving the reinforcement continuously. On the other hand, we can say that on every correct response, the organism is given the reinforcement. So this schedule of reinforcement is known as continuous schedule of reinforcement. I mean to say you, एक organism को every correct response पे रिवार्ड मिलता है या reinforcement दिया जाता है तो इसे continuous reinforcement schedule कहते हैं. For example, when the learner gives correct response to the teacher gives reinforcement on every correct response. जितने की correct response एक learner देता है और टीचर भी हर एक correct response पे reward या reinforcement देता है. So we can say that this is called the continuous schedule of reinforcement. जिस तरीके से B.F. सिकनर ने एक एक्सपेरिमेंट रैट और पिजन पे किया, जब भी रैट या पिजन करेक्ट रेस्पॉन्स देता था, हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे B.F. सिकनर पिजन और रैट को रिवार्ड और reinforcement देता था in the form of food. So we can say that this is known as continuous schedule of reinforcement. Dear students, in nutshell, we can say that continuous schedule of reinforcement is that reinforcement schedule जहाँ पर हर correct response पे एक organism या एक individual को reinforcement और reward मिलता है. Number 2, partial schedule of reinforcement. Partial schedule of reinforcement is that schedule of reinforcement in which organism is given sometimes reinforcement and sometimes not. यानी कि organism को कभी reinforcement या reward मिलता है, कभी reward और reinforcement नहीं मिलता है. So that schedule of reinforcement is known as partial schedule of reinforcement. जब एक learner कोई टास्क परफॉर्म करता है तो टीचर उसे हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे
रिवार्ड और रीइंफोर्समेंट नहीं देता है। जिस तरीके से हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कंटिन्यूअस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट में हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे एक लर्नर को रिवार्ड मिलता था, लेकिन इन केस ऑफ पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्नर को हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे रिवार्ड या रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द टीचर। वो टीचर कभी रीइंफोर्समेंट देता है और कभी लर्नर को रीइंफोर्समेंट नहीं देता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज partial schedule of reinforcement. Same is the case in case of the experiment which is conducted by B.F. Sickner on both pigeon and rat. जब एक रैट लिवर को प्रेस करता था तो एक्सपेरिमेंटर, आई मीन टू से यू B.F. Sickner, रीइंफोर्समेंट रिलीज करता था और चूहा जो था या पिजन वो अपनी हंगर नीड को सेटिस्फाई करता था। लेकिन हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे पिजन और रेट को रिवार्ड नहीं मिलता था इन द फॉर्म ऑफ फूड। समटाइम्स एक्सपेरिमेंटर विदहोल्ड द रीइंफोर्समेंट, समटाइम्स एक्सपेरिमेंटर रिलीजेस द रीइंफोर्समेंट और रिवार्ड। सो दिस शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट is known as partial schedule of reinforcement. In nutshell, we can say that it is that type of reinforcement जब एक ऑर्गेनिज्म को रिवार्ड कभी मिलता है और कभी रिवार्ड नहीं मिलता है। भले ही एक ऑर्गेनिज्म करेक्ट रेस्पॉन्स हर समय क्यों न देगा, लेकिन एक्सपेरिमेंटर जो है वो कभी रीइंफोर्समेंट को देता है और कभी रीइंफोर्समेंट को स्टॉप करता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नोन एज पार्शियल शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, और इट इज आल्सो called the intermittent schedule of reinforcement. Intermittent simply means sometimes you withhold reinforcement and sometimes you leave or release the reward or reinforcement.